Let us now discuss assessment of personality, or how do we assess personality. Assessment of personality basically means a formal effort which is aimed at understanding personality of an individual. Assessment refers to the procedures used to evaluate or differentiate people on the basis of certain characteristics. The goal of assessment is to understand and predict behavior with minimum error. Error कम से कम हो और accuracy ज़्यादा से ज़्यादा हो. सबसे पहले असेसमेंट्स में सबसे पहले टाइप की चीज़ें आती हैं हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट्स. Self reports are fairly structured measures, often based on theory, that require subjects to give verbal responses using some kind of rating scale. The first that we have here is the Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI. This was developed by Hathaway and McKinley, and its revised version is available as MMPI 2. MMPI basically consists of 567 statements. The subject has to judge each statement as true or false. The test is divided into 10 subscales, जिनके बेसिस पे आप डायग्नोस कर सकते हो हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, साइकोपैथिक डेविएट, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, पैरानोइया, साइकिस्थेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन. India में Malik and Joshi have developed the Jodhpur Multiphasic Personality Inventory known as JMPI, जो कि MMPI पे ही पूरी बेस्ड है. सो बेसिकली MMPI का इंडियन वर्जन इज JMPI. The second is Eysenck's personality questionnaire. This was developed by Eysenck, and this test initially assessed two dimensions of personality, which were introversion and extroversion, and emotionally stable versus emotionally unstable. These dimensions are characterized by 32 personality traits. बाद में उन्होंने एक और डायमेंशन ऐड किया था, साइकोटिसिज्म. सो बेसिकली इसमें जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था पेन मॉडल, PEN मॉडल, वही यहाँ पे असेस होता है. N stands for neuroticism, E stands for extroversion and introversion, and P stands for psychoticism. Then we have 16 personality factor questionnaire, 16 PF. अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था, जो कि कटेल ने बनाया था. कटेल की थ्योरी पे ही बेस्ड है 16 PF. This test provides with declarative statements, and the subject responds to a specific situation by choosing from a set of given alternative. यानी कि हर स्टेटमेंट के लिए कुछ 3-4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, जिसमें से आपको कोई एक चूज करना होता है. लेकिन सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स ऑल्दो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ईजी टू यूज़ होते हैं, बट इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिनमें हमारे पास दो मेन ड्रॉबैक्स हैं. फर्स्ट इज सोशल डिज़ायरेबिलिटी. सोशल डिज़ायरेबिलिटी इज़ द टेंडेंसी कि रिस्पोंडेंट अपने आप को सोशली डिज़ायरेबल मैनर में दिखाने की कोशिश करता है. यानी कि जब आपके पास गिवन सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके ऐसे ही ऑप्शन पे टिक करेंगे जो उनको सोशली डिज़ायरेबल बना रहा है, या उनके हिसाब से जो पढ़ के लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, राइट. So that is social desirability. Second is acquiescence. Acquiescence is the tendency of a subject to agree with items or questions irrespective of their contents. यानी कि वो हर चीज़ में yes पर ही टिक लगाएंगे, चाहे कंटेंट कुछ भी हो. After self-report, we have projective techniques. Projective techniques were developed to assess unconscious motives and feelings. These techniques are based on the assumption that a less structured or unstructured stimulus or situation will allow the individual to project his or her feelings, desires, and needs onto that situation. These projections are interpreted by experts. Some basic characteristics of different projective techniques are, जितने भी स्टिमुलस होते हैं इनमें अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं या पुअरली डिफाइंड होते हैं. असेसमेंट का पर्पस और स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा ये सब्जेक्ट को नहीं बताया जाता है. सब्जेक्ट को बताया जाता है कि कोई भी रिस्पॉन्स करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं है. Each response reveals a significant aspect of the personality.
एंड द लास्ट इज यूजली स्कोर और इंटरप्रिटेशन काफ़ी लेंदी होता है और कभी कभी सब्जेक्टिव भी होता है इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. Firstly, we have Rorschach ink blot test. This test was developed by Hermann Rorschach. इसमें 10 ink blots हैं. Ink blots means ink के धब्बे on a white paper. Out of these 10, 5 are black and white, as you can see. 1, this is black and white, this is black and white, this is black and white, this and this. 5 are black and white. 2 have some red ink, these 2. Some red ink is there, and the remaining 3 are in pastel colors. These 3. The blots are symmetrical in design, which means अगर आप इनको ऐसे बीच से divide करो तो दोनों साइड से symmetrical होते हैं ये. They are symmetrical in design and they have a specific shape and form. Each blot is printed in the center of a white cardboard जिसका size usually 7 inches by 10 inches होता है. The cards are administered individually in 2 phases. First phase आपका performance phase होता है जिसमें सब्जेक्ट को कार्ड दिखाया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आपको इसमें जो भी दिख रहा है, जो भी समझ आ रहा है वो बोलिए. यूजुअली फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को ये दिखाओ तो वो बोलेगा दिस इज़ अ बैट, इसको दिखाओ तो वो बोलेगा दैट दिस लुक्स लाइक अ मॉथ और अ बटरफ्लाई. इस टाइप के रिस्पॉन्सेज. सेकेंड फेज़ जिसको हम इंक्वायरी फेज़ बोलते हैं, इसमें जो भी रिस्पॉन्स दिया गया है उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट ली जाती है. सब्जेक्ट से बोला जाता है कि आपको आपने जो भी देखा वो कहाँ देखा, कैसे देखा और किस बेसिस पे आपको वो चीज़ लगा. आपको क्यों लग रहा है कि ये बटरफ्लाई है या आपको क्यों लग रहा है कि ये बैट है. दिस इज हाउ Rorschach is done. Then there is thematic perception test. This test was developed by Morgan and Murray. The test has 30 black and white picture cards as you can see here, and there is one blank card. यानी कि वो एक plain white paper होता है और बोला जाता है कि आपको जो मन में आ रहा है वो स्टोरी बनाओ. हर पिक्चर कार्ड को दिखा करके एक एक करके दिखाया जाता है एंड सब्जेक्ट से बोला जाता है कि आप इस पर एक स्टोरी बनाओ. सो जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई गई है और आपको बोला जा रहा है कि इस पर एक स्टोरी बनाओ. यूजुअली 4 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं इसमें कि प्रेजेंट में इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ऐसा क्या हुआ था कि अभी ये हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, एंड जो लोग आपको दिख रहे हैं उनके फीलिंग्स या मूड्स बताओ. सो 4 थिंग, द पास्ट which means what led to this, what is happening which is the present, what will happen as in the future, and what are the feelings of the characters shown. So ये 4 चीज़ें बतानी होती हैं. एंड लास्ट वाली जो ब्लैंक होती है उसमें बोलते हैं कि आपको जो स्टोरी मन में आ रही है कुछ भी आप स्टोरी बना सकते हो. यूजुअली TAT, ये इसको TAT भी बोलते हैं, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट. TAT की स्कोरिंग के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवेलेबल है जिससे कि सब्जेक्टिव स्कोरिंग को भी ऑब्जेक्टिव में चेंज किया जा सके. द टेस्ट हैज़ बीन मॉडिफाइड फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर द एजेड. उमा चौधरी's Indian adaptation of TAT is also available. Then we have Rosenwig's picture frustration study, also known as PF study. This test was developed by Rosenwig to assess how people express aggression in the face of a frustrating situation. So for this, a series situation depicted through cartoon-like pictures is shown to the client where one person is seen frustrating the other person. The subject is asked to tell whether what the other frustrated person will say or do. An attempt is made to examine whether the focus is on the frustrating object or on the protection of the frustrated person or on the solution of the problem. For this particular test, Parikh has adapted for the Indian population. Next projective technique is sentence completion test, also known as SCT. This test makes the use of a number of incomplete sentences. So sentence है but incomplete sentence है, subject को उस sentence का आगे का sentence लिख करके उस sentence को complete करना है. It is held that the type of endings used by the subjects reflect their attitudes, motivations, and conflicts. The test provides subject with several opportunities to reveal their underlying unconscious motivations. So some examples are that there might be an incomplete sentence that says, I feel that my father seldom, and then they have to complete it.
When odds are against me, I always wanted to, if I were in charge. So such questions makes the client think कि okay, when the odds are against me, what would I do? And then the client will write that. That will reveal some unconscious motivation of that person. Next is draw a person test. It is a simple, Next is draw a person test. It is a simple test in which the subject is asked to draw a person on a sheet of paper. After the completion of the drawing, the subject is generally asked to draw the figure of an opposite sex person. Finally, the subject is asked to make a story about the person as if he or she was a character in a novel or play. Some interpretations done through this test are कि अगर फेशियल फीचर्स को omit कर दिया गया, यानी कि फेस तो बनाया है लेकिन आंखें नाक मुंह नहीं बनाया है, दैट सजेस्ट दैट द पर्सन ट्राइज टू एवेड अ हाईली कॉन्फ्लिक्ट रिडन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अगर नेक पे बहुत ज़्यादा ग्राफिक एम्फेसिस दिया गया है, दैट सजेस्ट लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस. अगर हेड को बहुत ज़्यादा लार्ज बनाया है एज कम्पेयर टू द बॉडी, दैट सजेस्ट ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज एंड प्री ऑक्यूपेशन विद हेडेक्स. Although projective techniques help us to understand unconscious motives, deep-rooted conflicts, and emotional complexes of an individual, the interpretation of the responses in projective techniques requires very sophisticated skills and specialized training. There are problems associated with the reliability of scoring and validity of interpretations also, because your interpretation about a certain story might be different than my interpretation or my perception of that story. After projective techniques, we have behavioral analysis. A person's behavior in a variety of situations can provide us with meaningful information about their personality. Observation of behavior serves as the basis of behavioral analysis. In this, firstly, we have interview. Diagnostic interviewing generally involves in-depth interviewing which seeks to go beyond the replies given by the person. If it is an unstructured interview, the interview seeks to develop an impression about a person by asking a number of questions. If the interview is the structured interview, it addresses very specific questions and follow a set procedure. This is often done to make objective comparisons of persons who are being interviewed. After interview, observations can be done. Use of observation for personality assessment is a sophisticated procedure that cannot be carried out by untrained people. A person needs to be trained in observations. It requires careful training of the observer and a fairly detailed guideline about analysis of behaviors in order to assess the personality of a given person. With carefully designed observation, the clinical psychologist may gain considerable insight into a client's personality. Both interview and observation, despite of their widespread use, have certain limitations like इसके लिए बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, दैट इज़ वेरी डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग. द मेयर प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर में कंटामिनेट द रिजल्ट्स. कभी कभी जिन लोगों को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो ऑब्जर्वर के प्रेजेंस की वजह से डिस्ट्रैक्ट होकर के उनके रिस्पॉन्सेस चेंज हो सकते हैं या उनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं. हेयर द मैच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड डेटा. After this, we have behavioral ratings. Behavioral ratings are generally taken from people who know the assessee intimately and have interacted with them over a period of time or have had a chance to observe her or him. They attempt to put individuals into certain categories in terms of their behavioral qualities. The categories may involve different numbers or descriptive terms. Different numbers of descriptive terms. Some limitations of behavioral ratings are usually it may have a lot of biases. The presence of a single favorable or unfavorable trait may create halo effect. For those who don't know halo effect, it basically means कि अगर मुझे पता है कि एक person बहुत caring है तो हम assume कर लेते हैं कि यार ये caring है तो ये trustworthy भी होगा.
या ये मतलब अगर किसी में एक फेवरेबल ट्रेट है तो हम उसको उसके बारे में और बहुत सारे फेवरेबल ट्रेट्स ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं. सो अगर आप किसी के लिए ऑलरेडी फेवरेबल हो तो हैलो इफेक्ट की वजह से आप उसके सारे फेवरेबल ट्रेट्स ही देखोगे, और अगर आप ऑलरेडी किसी एक वजह से एक पर्सन को पसंद नहीं करते तो आप उसमें सिर्फ कमियां ही कमियां देखोगे. Second limitation is raters have a tendency to place individuals either on the middle of the scale or by avoiding extreme positions, or in extreme positions by avoiding middle categories on the scale. यानी कि अगर रेटिंग है 1 2 3 4 5 6 7, तो या तो आप मिडिल कैटेगरी बायस कर रहे हो, यानी कि सारे क्वेश्चंस पे आपने 4 4 4 पे टिक लगा दिया, या फिर आप एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस कर रहे हो, यानी कि या तो आप 1 पे टिक लगा रहे हो या 7 पे टिक लगा रहे हो. That means there is a extreme response or middle category bias. These biases are very common in behavioral ratings. After this we have nominations. Nomination is a टेक्निक जो बहुत कॉमनली आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पर हम वोटिंग करते हैं लोगों के लिए. This method is often used in obtaining peer assessment. It can be used with persons who have been in long-term interaction. Here, each person is asked to nominate one person from the group with whom they would prefer to work, play, study, etc., and then tell the reason of their choice. Nomination thus received may be analyzed to understand the personality and behavior qualities of the person. This technique is dependable, but it may be biased. The last technique of behavioral analysis is situational test. The most commonly used test for this kind is the situational stress test. It provides us with information about how a person behaves under stressful situations and hence reveals their personality. The test requires a person to perform a given task with other persons who are instructed to be non-cooperative and interfering, and it hence serves like a role play. With this, we are done with the chapter 2 of your class 12th, which was self and personality. Thank you and have a nice day.